Good morning, students. Today we will start chapter 4th, Organization and Classification of Data. In previous chapter, we already completed the collection of data from primary and secondary sources. By primary and secondary sources, you are getting that data is known as raw data or unclassified data. This data is highly unorganized and difficult to handle. So, to facilitate easy understanding, there is a need to organize the data. Organization means to manage the data in such a way that can understand easily. Then organization of data means to present the data in a form which facilitates easy understand of data and make it suitable for further processing and interpretation. The most important aspects of organizing data is to classify it. जब भी आपको data को क्या करना है, organize करना है, तो first step is you have to classify. Without classifying, data cannot be managed. Then classification is the process. Classification जो एक process है of arranging data into different groups or classes on the basis of some common characteristics. Classification of data converts raw data into pure data. Next is basis of classification of data. अब ये basis क्या है classification के? तो first है geographical and spatial classification. When the classification is based on the geographical area or locational like countries, states, cities, differences of data, the agriculture yield per hectare for different countries as given below is an example of geographical classification. अगर हम प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो हर जगह की प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन केजी पर हेक्टेयर. अब मैं बात करती हूँ चाइना की, तो चाइना की प्रोडक्शन है कितनी, 269.2. इंडिया की 123.7. पाकिस्तान 257.5. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल. दिस डाटा इज ओनली एंड ओनली इमेजिनरी डाटा. दिस इज नॉट अ एक्चुअल डाटा. वट यू हैव टू डू, दिस इज डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफी कि वहाँ की जियोग्राफी जो है वो कैसी है. Next is chronological classification. This classification is one in which data are classified preferably in ascending or descending order on the basis of difference in time. अब ये time के according. Chronological classification means which is according to time or different years. For example, 1971 population is 54.8 crore, 81 68.3 crore, 91 84.4 crore. Next is qualitative classification. When the data are classified according to qualities or attributes of data such as honesty, beauty, intelligence, etc., then the classification is referred to as qualitative or descriptive classification. It can be simple or manifold. ये classification simple भी हो सकता है और आगे कहीं folds में भी हो सकता है. Next is quantitative classification. When the data is classified on the basis of phenomena which is capable of measurement in quantitative form such as age, height, weight, sales, profit, etc. The classification is referred to as quantitative classification. इसे कौन सा classification कहा जाता है? Quantitative classification, and this is known as numerical classification. For example, earning of different departmental store can given below is an example of quantitative classification. That table I am making, daily earnings of 40 departmental stores in 1000 rupees. That table is up to 100 rupees. कितनी है, कितने उसकी है, 6 stores. 1012 to 200 14, 2012 to 300 8, 3012 to 400, that is 12. Now I am discussing about the variable. What is a variable? अब ये variable क्या होता है? Variable is a characteristics or phenomena which is capable of being measured and generally change its value over time. जिसका नाम ही variable है तो उसकी value क्या होती रहती है? Time to time change होती रहती है.
There are two type of variable, one is discrete and one is continuous. अब ये discrete variable क्या होता है और continuous variable क्या होता है? तो देखिए, a discrete variable can take only certain integral values. Its value change only by finite jumps. Number of students in a class X could be 1, 9, 10, 20, etc. And continuous variable are those variable which can take any value, integral value or fractional value in specified interval. For example, 0 to 10 can contain integral values such as 1, 4, 7, etc. and fractional values like 0.5, 4.6, 5.3. Maximum and minimum temperature of a city, height of an individual, weight of an individual are example of continuous variable. Next, I am talking about frequency distribution. Frequency distribution means जो आपकी frequency है वो क्या है, distributed है. So you will see this frequency distribution. It is a comprehensive way to classify raw data of quantitative variable. It shows how different value of a variable are distributed in different classes along with their corresponding class frequencies. It facilitates easy understanding of data. It is a type of statistical series. I will give you an example of this. What is a statistical series? Statistical series क्या होती है? In which the data are arranged, जिसका नाम ही statistical है और series बनानी है. तो series के लिए firstly you have to arrange the data in a proper and systematic manner. There are two type of statistical series, that is individual series and frequency distribution. अब इसके लिए कुछ terms आती हैं, but उस term से पहले I will clear you some things like individual series. Individual series is like 5, 10, 15, 20, 30 I am taking. This series is known as individual series. Now I am telling you about discrete series. अब डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है? जिसमें आपको पता चलता है किसका, एक्चुअल डेटा का. फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं. तो इट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी 50. व्हाट इट विल बी? 50 होगी. तो आई हैव कंडक्टेड वन टेस्ट. मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया इंग्लिश का, जिसमें मैंने 10 to 50 मार्क्स जो है वो अलॉट किए. 10, 20, 30, 40, 50. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50. आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितना स्कोर किया? 10 मार्क्स. उसके बाद 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितना स्कोर किया? 20 मार्क्स. और उसके बाद 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया 30 मार्क्स. देन अगेन 10 जिन्होंने स्कोर किया 40 मार्क्स. हाउ मच इज लेफ्ट? यू विल सी 35, 15 इज लेफ्ट. So it means this is known as discrete series that will tell you the actual value. Then continuous series. Continuous series is that series in which I will tell you the continuation. For example, these are known as class intervals and this is frequency. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. This will not tell you the actual data. अब 0 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? सपोज 5. 10 to 20 लेने वाले कितने हैं? 6. 20 to 30 लेने वाले कितने हैं? 8. दिस ऑल आर इमेजिनरी डेटा, नॉट द एक्चुअल डेटा. द टर्म्स नेक्स्ट इज द टर्म्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एक्सप्लेन्ड बिलो. वन इज फ्रीक्वेंसी. अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स a given value appears in a series. Then class frequency. It means the number of value in a particular class. जैसे 0 to 10 है. 0 to 10 के सामने जो frequency आ रही है that is known as class frequency. Next is class limits. Class limits क्या होती हैं? Two extreme ends of the class. Lower value is called lower class limit and higher value is known as upper class limit. For example, 10 to 20 is given. 10 is lower class limit and 20 is upper class limit. Next is class width. अब ये class width क्या होती है? It is a difference between upper class limit and lower class limit. Next is class midpoint. Class midpoint कैसे निकालेंगे बेटा?
If 10 to 20 is given, 10 plus 20, upper class limit plus lower class limit upon 2. क्लास विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा, जिसके सामने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रीवियस एग्जाम्पल आई टोल्ड यू आई हैव कंडक्टेड अ टेस्ट, देन सो मैनी स्टूडेंट्स गॉट 30 मार्क्स. बड़े सारे स्टूडेंट ने 30 मार्क्स गेट किए, तो दैट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा. देन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा, जितने कम जो है वो विच हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज नॉन एज परसेंटेज. अब इसमें क्या करते हैं, आपको क्या निकालनी है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इनटू में 100, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू में 100. सपोज 50 में से 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 मार्क्स स्कोर किए, तो 5 अपॉन 50 इंटू में 100, that is known as relative frequency. Thank you beta. I will make next video for you, that is types of frequency distribution. I hope कि आपको समझ आ गया होगा.